Good morning, student. This is part 3 of the chapter correlation, and in this video we are going to learn about Karl Pearson's coefficient of correlation. Karl Pearson coefficient of correlation is an extensively used mathematical method in which the numerical representation is applied to measure the level of relation between linear related variables. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेटा ये मैथमेटिकल मेथड है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं टू सीरीज में रिलेशंस किस तरीके से हैं एंड वी कैन रिप्रेजेंट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द वेरिएबल r. Now, direct method to calculate the Karl Pearson coefficient of correlation is sigma dx dy upon under root sigma dx square into sigma dy square. dx आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? dx इज इक्वल्स टू x माइनस मीन एंड dy इज इक्वल्स टू y माइनस y मीन. इट मीन्स आपको जो दो सीरीज दी जाएंगी x और y की, उस सीरीज का आप पहले इंडिविजुअली मीन निकालोगे और सारी वैल्यूज को मीन से माइनस करोगे तो आपकी dx और dy आ जाएगा. देन यू विल कैलकुलेट dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर. We will learn more about this when we are going to do the calculations related to Karl Pearson coefficient of correlation. Now, this is a second formula, that is shortcut method. The n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy upon under root n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx द होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy द होल स्क्वायर. इन दिस मेथड वी विल नॉट कैलकुलेट मीन. ये शॉर्टकट मेथड है. यहाँ पे हम सीरीज में से कोई भी एज्यूम मीन मान लेंगे. इज इट क्लियर अबाउट द फॉर्मूला? That is dx is equals to x minus a and dy is equals to y minus a. आप dx में से कोई भी मतलब x की सीरीज में से कोई भी a की वैल्यू ले सकते हो एज एन एज्यूमिंग, और यही चीज आप y की सीरीज में करोगे, कोई भी a की वैल्यू आप ले सकते हो. Now we are going to learn how to solve the Karl Pearson coefficient of correlation. Here the question is given, find Karl Pearson coefficient of correlation between the price and quantity demanded from the following data. Price and demand, two series is given. Price is an X series and demand is an Y series. Here I am using the direct method and you can see here I have written the formula r is equals to sigma dx dy upon under root sigma dx square sigma dy square into sigma dy square. It means I have to calculate first mean. तो मीन का फॉर्मूला हमने ये लिखा है बेटा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. एक्स की सीरीज को हमने ऐड किया है, 75 आया है. 75 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उससे डिवाइड किया तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? 15. Now to calculate dx हमने क्या करना है? x में से मीन को माइनस करना है. x की फर्स्ट वैल्यू 5 है और x की सीरीज की मीन क्या था बेटा? 15. इट मीन्स 5 माइनस 15 इज माइनस 10. 10 माइनस 15 इज माइनस 5. 15 माइनस 15 इज 0. 20 माइनस 15 इज 5. 25 minus 15 is 10. In the same way, first we will calculate the mean of the y series, that is sigma y upon n. Sigma y means y का total 150 है, तो it means mean कैसे निकालेंगे? 150 upon 5, that is 30. Now dy की सीरीज कैलकुलेट करेंगे. dy में फर्स्ट वैल्यू 10 कैसे आएगी? y की फर्स्ट सीरीज 40 है और मीन 30 है. 40 माइनस 30 इट इज 10. सेकेंड 35 माइनस 30 इज 5. 30 minus 30 is 0. 25
minus 30 is minus 5. 20 minus 30 is minus 10. Now, in the formula, we are using dx square and dy square also. So, after calculating dx, we have find out dx square. dx क्या था? -10. -10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 100. -5 का स्क्वायर करेंगे, we'll get 25. 0 square is 0. 5 का square is 25. 10 का square is 100. And next we need dy square. dy, 10 का square is 100. 5 is 25. 0, 0. -5 square is 25. -10 square is 100. And in the formula, we also need dx into dy. Therefore, the last column is dx into dy. -10 into 10, minus 100. -5 into 5, minus 25. 0 into 0 is 0. 5 into -5, minus 25. 10 into -10, it is minus 100. Now, we will total all the things which we will need it in the formula. We will not total those things which we do not need in the formula, which are not required in the formula. You can see here, I have not done the total of dx or dy because in the formula, we need sigma dx dy. Therefore, I have done the total of sigma dx dy, dx square and dy square. You have to do the totals only for the those series, those which are required in the formula. Now, we will put the values. Sigma dx dy की बेटा minus 250 upon under root dx square is dx square की वैल्यू भी 250 है बेटा and dy square की वैल्यू भी 250 है. बोथ आर इन द अंडर रूट, तो अंडर रूट में से हम एक वैल्यू बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा. दैट इज r इज इक्वल्स टू -250 अपॉन 250. इट मीन्स द Karp-Pearson coefficient of correlation is -1. I hope it is clear. We will do one more question related to it. The height of a group of father and sons are given below. Height of a father is 65, 66, 67, 68, 70, 73. Height of a son is 67, 68, 64, 69, 72, 71, 69, 72. Now, the height of the father is an X series and height of a son is Y series. First, we will calculate the mean of the X series. We will total the X series. It is 544. The formula for the mean is sigma x upon n. That is 544 upon 8. 8 क्या है? Number of items. When we calculate this, the mean of the X series is 68. Now, to calculate dx, we will calculate the X series with the 68 value. It means 65 minus 68, it is -3. 66 minus 68, -2. 67 minus 68 is -1. 67 minus 68 is -1. 68 minus 68 is 0. 68 minus 68 is 0. 70 minus 68 is 2. 73 minus 68 is 5. Now students, to calculate the value of dy, we have calculated the value of mean first, that is sigma y upon n. Sigma y means total of y, that is 552 divided by number of observation. 552 divided by 8, the answer is 69. The formula to calculate dy is y minus y dash, that is y minus mean. 67 minus 69, it is -2.
68 minus 69 minus 1. 64 minus 69 is minus 5. 69 minus 69 is 0. 72 minus 69 is 3. 71 minus 69 is 2. 69 minus 69 is 0. 72 minus 69 is 3. Now, what we will do next? We will find out dx square and dy square. To calculate dx square, we will square the value of x dx. Minus 3 the whole square is 9. Minus 2 the whole square is 4. Minus 1 the whole square is 1. Minus 1 the whole square is 1. 0 का 0 होता है बेटा. 2 का square is 4 and 5 square is 25. Now, in the same way, we will calculate the value of dy square with the help of dy. First value is minus 2. Minus 2 का square करेंगे तो क्या आएगा first value dy square की? 4. Minus 1 का square करेंगे तो 1. Minus 5 का square करेंगे 25. 0 का 0 बेटा. 3 का square is 9. 2 का square is 4. 0 का square 0. 3 का square is 9. Now, the last thing which we will calculate, that is dx into dy. dx की फर्स्ट वैल्यू माइनस 3 है और dy की फर्स्ट वैल्यू माइनस 2 है. इट मीन्स माइनस 3 इंटू माइनस 2, इट इज़ वॉट? 6. माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2. माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज 5. माइनस 1 इंटू 0 इज 0. 0 into 3 is 0. 0 into 2 is 0. 2 into 0 is 0. 5 into 3 is 50. Now we will total the value of dx square, dy square and dx dy. Now we will put this in the formula. The formula for correlation is r is equals to sigma dx dy upon under root sigma dx square into sigma dy square. sigma dx dy की वैल्यू बेटा 28 थी. sigma dx square 43 है और dy square 52. Now, when we multiply 43 into 52, what we will get? 2236. Therefore, our value is 28 divided by under root 2236. जब हम 2236 का 2236 का अंडर रूट निकालेंगे, इट इज़ 47.28. Therefore, r is equals to 28 upon 47.28. The final answer is 0.59. I hope it is clear. Now, we are going to calculate Karl-Pearson coefficient of correlation from shortcut method. Okay, here the question is given in which the two series is given x and y. And in a shortcut method, we need not to solve the value of mean, because we will calculate the dx value with the assumed mean. I have taken here in a x series, the assumed mean is 36. And in the y series, I have taken the assumed mean is 31. Now, to calculate dx value, what we have done? 28 minus 36, that is minus 8. 45 minus 36, 9. 40 minus 36 is 4. 38 minus 36 is 2. 35 minus 36 is minus 1. 33 minus 36 minus 3. 40 minus 36 is 4. 32 minus 36 is minus 4. 36 minus 36 is 0. 33 minus 36 is minus 3. Now, dy का टोटल करते हैं बेटा. तो सॉरी, we will calculate the dy value with the assumed mean. assumed mean dy में हमने क्या माना है? 31. It means 23 minus 31 is minus 8. 34 minus 31 is 3. 33 minus 31 is 2. 34 minus 31 is 3. 30 minus 31 is minus 1. 26 minus 31 is minus 5. 28 minus 31 is minus 3.
31 minus 31 is 0. 36 minus 31 is 5. 35 minus 31 is 4. Now we will calculate dx square. माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 0 स्क्वायर इज 0, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9. dy स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16. And now the next value which we will obtain is dx. We will calculate is dx into dy. Minus 8 into minus 8 is 64. 9 into 3 is 27. 4 into 2 is 8. 2 into 3 is 6. Minus 1 into minus 1 is 1. Minus 3 into minus 5 is 15. 4 into minus 3 is minus 12. Minus 4 into 0 is 0. 0 into 5 is 0. Minus 3 into 4 is minus 12. Now, first we will write the formula. Coefficient of correlation is n into sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy under root bracket open n dx square minus dx the whole square bracket close, second bracket n sigma dy square minus sigma dy the whole square bracket close. It means in this we have to we have to total the values of dx dy, dx, dy, dx square and dy square. Therefore, first we will calculate the dx value total, that is 0. dy total is also 0. Next dx square, it is 216. dy square the total is 162 and dx dy total is 97. Now we are going to put the values. n means number of observation, that is 10. dx dy बेटा 97 था. dx की वैल्यू भी 0 है, dy की वैल्यू भी 0 है, that is 0 into 0 upon under root 10 into 216. dx square की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे. सिग्मा dx का टोटल आपका 0 आया था तो 0 का स्क्वायर किया है. इन द सेम वे हेयर n 10 है, dy स्क्वायर का टोटल 162 है, dy आपका 0 था सिग्मा dy. नाउ 10 into 97 is 970 upon under root 216 into 10 is 2160 and 10 into 162 is 1620. We will calculate this with the help of the calculator. When we will solve this with the help of the calculator, the answer is 0.5186. Therefore, the coefficient of correlation is 0.5186. I hope it is clear. Only the difference between the direct formula and the shortcut method is that in a shortcut method, we need not to calculate the value of mean. हमको mean की value calculate नहीं करनी. हम directly assume mean से सारी values निकालेंगे. And the formulas are different. We have to put the formula according to that. I hope it is clear now how to calculate Karl Pearson's coefficient of correlation. Thank you, students.